Hello, everyone. I think I'm live. Yes. So today is going to be a very special day because we are going to look at the UGC NET June 2023 question paper, and we are going to see how is the paper and what else how was the paper and what else we could have done in terms of preparation to get a better result in terms of the questions that we marked. So we are going to talk about all of that. I am just waiting for a few other people to join. I can already see Falak, Manju, Rakesh. All of them are saying good evening. Good evening to all of you. And thank you so much for joining this YouTube live. This live is going to be very special because I'm going to discuss the entire question paper, and not just the question paper. We are also going to look at the question paper from the point of view of the next December exam, and we are going to see that how was the paper, how was it different from the last or previous year papers, and how we can make some changes in our preparation style so that we can score better next time. So all of that we are going to talk about. Right, Rakesh says, ma'am, I'm your online student. Hi, Rakesh. I am also going to, help you understand how the online course that we are giving links, the different parts of the online course can be connected together to see the entire paper. So I'm going to take you module by module through different sections, different lessons, and we are going to see how questions were asked from different areas so that I can emphasize on the areas which you should be focusing more on, and we'll also look at the areas which we can neglect or which we can keep at the back while we are preparing for the upcoming exam. Rishikesh says, good evening, ma'am. Thank you so much for such dedication for us. Be blessed, ma'am. Thank you so much. What will be the cutoff of general category morning shift? Many options are wrong and my answers are correct. What to do in this case? Okay, so a lot of people are anxious. Don't worry. Two things. Number one, I'm going to share a link with you right now, which is the link of the question paper. So I know that most of you who have given the exam can download the question paper from the NTA site, but the question paper and the answer key are very jumbled. आपको जो क्वेश्चन का कोड है उससे आंसर के कोड को मैच करना पड़ेगा, which is a very tedious process. So my team has done a fantastic job in clubbing both these things together, and we are giving you a PDF which has question. Just below the question you have the right answer which has been given by NTA. Okay, so I am sharing the link of that PDF. You have to fill a Google form. After you submit the form, you'll get that PDF link and you can directly download it. I'm sharing that with you, and I'll keep repeating it after every 15-20 minutes so that who are joining late also know कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, because I'll take you through that entire question paper. मैं भी अपने मोबाइल पे वो question paper अभी खोल के बैठूंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी, and I want you guys also to open the question paper in a separate device. So अगर आप मोबाइल से ज्वाइन करें, so just ask your mother or anybody in your home to give their mobile for next 1 hour so that आप एक से मुझे देख सकते हैं and एक डिवाइस से आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, राइट. आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर the module wise syllabus that we ask every student to refer to when they are preparing for UGC NET, so that meanwhile जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूंगी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू कि ये क्वेश्चन कौन से मॉड्यूल के कौन से लेसन से आया था, सो दैट यू नो कि क्या क्या पढ़ना है. काफी लोग काफी चीजें स्किप करते हैं, विच आई विल टेल यू is really bad, because हम देखेंगे काफी माइनर राइटर्स से इस बार क्वेश्चन आए. सो ऑल दोस माइनर राइटर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो मैं दोनों लिंक्स आपके साथ शेयर करी हूँ. प्लीज open the question paper in a different device. Just give me a moment. I'll share that link. Okay, meanwhile I would just want to tell each one of you out there कि please कट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए. From question paper link, I'll just type that down.
Just give me a moment. Okay, so I have, yes, I have also pinned this message so that आप सबको on top पे ये दिखेगा. Okay, and साथ ही में I am also going to, and I'm also going to post the module-wise syllabus link. Please keep referring to the syllabus also because आज अपने लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजें. So I don't want any one of you to miss out on what I'm sharing. And जहां जहां मैं जो जो चीजें आपको बोलूं, I want you to, ensure कि आप वो चीजों को भी ध्यान से पढ़ें. Okay. I'll just allow me a moment. Let me pin both these messages together so that you guys don't have a problem. Uh-oh. Sorry, okay, cool. No problem. So I've pinned the message. आप वहां से download कर सकते हैं. We'll start in next 30 seconds. So I'm just giving you 30 seconds to download the question paper from the Google form that I've just shared with you. So फटाफट वो download करिए, दूसरे device पे खोलिए, and then I am going to take you through the entire paper. Meanwhile, जब तक आप ये करते हैं, I want to quickly discuss how is paper one. So majority of this live is going to be about the discussion on paper two, but I just want to quickly take you through paper one as well. So as far as paper one is concerned, when I was going through it, I could see, as I already told you right after the exam when I went live on YouTube, I already told you that this time they did not ask 5 questions from each unit. So this time what they did was that they were asking any number of questions from different units. So कई यूनिट से 2 क्वेश्चन थे, कई यूनिट से 5 क्वेश्चन थे, कई से 7 थे. So that was something which was shocking for all of us. So next time onwards, I want all of you to be very well prepared with all the units of paper one. You cannot take the risk of leaving 1 or 2 units. As far as DI, I saw I was not able to see paper two ka DI, but sorry, shift 2 ka DI, but shift 1 ka DI was pretty simple. 50, 55 is type के numbers थे, and they asked you to calculate different things. So the digits, since they were very, very easy for calculation purpose, so the DI was good. Other than that, I think there was a question on binary and decimal. There was also a question on valid, invalid argument. Compound interest पे पूछा गया था question. National education policy पे 2 या 3 questions थे. So overall, if I look at it, it was a very well diversified paper. National education policy, as you all know, was recently launched by the government. So वहां से questions आना is something which all of you should expect next time also, because national education policy is directly linked to the education sector, and since UGC NET paper 1 focuses on education sector, so वहां से वो लोग ज्यादा questions देंगे. Overall, paper one wasn't very, very difficult. It was moderate. It wasn't very easy also, because I could see that there were few tricky questions here and there, but otherwise the paper was moderate. As far as the cutoff is concerned, before I dive into UGC NET paper 2, because it's going to be a very long discussion, I want to quickly talk about the cutoff. Cutoff, as I've already posted on all my social media platforms, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Telegram, everywhere we have posted the cutoff. Cutoff, what we are expecting for UGC NET paper 1 and 2, which paper 2 being English, is around 58% for general category for NET and around 63% for GRF. This was what I initially posted when I was just interacting with the students right after the exam, and I did not have a look at the question paper myself. Now, today, when I went through the question paper of both shift 1 and shift 2, I could see that the cutoff would remain similar for NET, but JRF cutoff might rise a little bit. It can be around 64-65% also. But again, I am assuming this because based on the reviews of my students, I'm saying this, they all performed pretty well. I don't know about how the entire nation performed, so I am not at the right position to unofficially
announce a cutoff from my side, but I would stick to what I initially said. It would be 58% around for general. For ST, SC, OBC, EWS, PWD, you can calculate, you can decrease 4 to 5% in each of these cases and accordingly calculate your own cutoff. Otherwise, you can also go through the community tab of my YouTube channel. You will see there's a black colored poster which we have made where we have posted the cutoff. So you can just have a look from the YouTube community tab, or you can go to Facebook, Instagram, just put Arpita Karwa, you'll find my page, and there also we have posted it. Okay, so the final cutoff for each of the categories for NET and JRF is there available from our side. And now that we have covered general overview of paper 1 and cutoff, let me dive directly into the question paper. I am going to start with shift 1 ka UGC NET English ka paper analysis. But let me see how much time will it take for me to cover end to end for shift 1. If in case we are not able to cover the entire shift 1 and shift 2 in this video, I'm going to definitely come again live tomorrow and discuss the rest of it. But I'm going to start with UGC NET 14th June 2023 shift 1 paper 2 analysis right now. Okay, so I have the question paper in front of me. I also have the unit-wise syllabus that we refer to in our online course with me, so that I can tell you that ye question yahan se aaya hai. So please focus on that part specifically. I'm saying that again and again. Why? Because a lot of people who join live are a part of my online course. So since uh, they are following the structure of my online course, I need to tell them that this question came from this particular portion, so please focus on this portion, don't miss it out. So I'm going to keep referring to modules and chapters. For those of you who are not a part of my online course, just a slight reminder, the syllabus that I'm going to share and I'm going to talk about is divided into modules, chapters, and lessons. We have different modules: module 1 British literature, 2 American literature, and so on and so forth, and there are chapters and lessons inside it. The entire syllabus is available free of cost on my website, arpitakarwa.com. Just type arpitakarwa.com, go to full course syllabus, and you'll find the entire syllabus. आप कंट्रोल F अगर अपने कंप्यूटर पे प्रेस करेंगे तो आपको फाइंड का एक ऑप्शन आएगा जहां पे यू कैन राइट द नेम ऑफ द राइटर, एंड उस मॉड्यूल के अंदर द सर्च फंक्शन विल take you exactly at the name of the author. So this you can do when I am discussing all these modules, or later you can watch this live again and then go through the modules so that you know कि इस sequence से हमें पढ़ाई करनी है. Okay, right. So let us begin with the paper analysis. So I'm going to, it is not possible for me to go through all the 100 questions, but I've selected a few questions जहां से आपको एक basic understanding मिलेगी कि paper किस तरीके से बना है. You will also understand that what, like from the examiner's point of view, how is the paper set. So आपको किस तरह से किस writer को पढ़ना है. So my main motive in explaining you all of this is to tell you exactly एक preparation strategy, preparation style which you can follow for the next exam. Okay, so let's start with the paper. I hope आप सबने जो pin comment में link है वहां से paper download कर लिया है. Okay, and if all of you are ready with the question paper in hand, so I have the question paper with me. So this is the paper. It has question and the option, like the correct option given by NTA also. आज मेरे पास कई students का message आया था कि ये question गलत है, ये question गलत है. So जो मेरे पास उनके messages आए हैं, I am also going to discuss कि मुझे क्या लगता है इन questions के बारे में. Okay, right. पेपर 2 शिफ्ट 2 का पेपर अभी उसमें अवेलेबल नहीं है बिकॉज माय टीम इज स्टिल वर्किंग ऑन इट. सो दोज ऑफ यू आर वरिड, ये सेम लिंक पे अगर आप कल वापस जाएंगे तो यू विल आल्सो गेट द पेपर 2 लिंक. ओके, पेपर 2 का सिलेबस लाइक दिस. आज हमारे पास पेपर 2 का शिफ्ट 1 का सिलेबस, शिफ्ट 1 का पेपर है. शिफ्ट 2 का जो पेपर 2 का पेपर है, it's very confusing to say this repeatedly. शिफ्ट 2 के जो पेपर्स है, पेपर 1 एंड पेपर 2, वो कल अपलोड होंगे इसी लिंक पे. ओके, सो लेट्स बिगिन. Okay, so for the first question which I want to discuss is question number 7. So the question number 7 says, which 3 of the following plays have been written by Nazim Ezekiel? Now Nazim Ezekiel, friends, is a very very popular Indian writer जहां से questions आते हैं. Now इनके 5 वर्क्स दिए हैं, इनमें से पूछा गया कौन से 3 वर्क्स नजीम एज़ेकियल ने लिखे हैं. राइट,
सो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है, जो भी वर्क्स इसमें लिखे हैं, सबका मैरिज पोएम, नालिनी, मिस्टर बेहराम एंड स्लीप वॉकर्स, ये सारे ऐसे नाम है जो आपने नहीं सुने होंगे, बिकॉज निज़्म इज़कील जो एक राइटर है, ही इज फेमस फॉर हिज पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है इन देयर बैचलर्स एंड मास्टर्स। सो एज आई ऑलवेज से कि आप किसी भी कॉलेज के बैचलर मास्टर के सिलेबस को पढ़ के नेट क्लियर नहीं कर सकते। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ राइटर एज इंपॉर्टेंट एज नजीम इज़कील, सो आपको उनके माइनर वर्क्स के नाम पता होने चाहिए। वन वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स टू फॉलो इज दैट have a separate list of minor writers and major writers. In English literature, there are major writers and there are some minor writers. For example, if we talk about major writers, we have William Shakespeare, Milton, John Donne, T.S. Eliot, Virginia Woolf, Jane Austen. All these are major writers. But at the same time, there are a lot of minor writers like Walter Pater. Then if you talk about James Synge, if you talk about the modern writers, then there's another writer called Robert Graves. There is a poet, Rupert Brooke. All these are minor writers. So what happens, friends, is that they ask questions from major writers as well as minor writers. Most of the times we only study major writers, but major writers के major works की depth में से question आता है, and major writers के minor works की titles में से question आता है. Just like this, नजीम इज़कील का जो question आया है, वो मेजर राइटर है इन इंडियन लिटरेचर. नजीम इज़कील इज अ वेरी फेमस राइटर. उनके माइनर वर्क से क्वेश्चन आया. सो एज आई ऑलवेज से इन माय ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो कि हम आपको जब नोट्स देते हैं, जब मैं आपको लेक्चर्स पढ़ाती हूँ, तब आई ऑलवेज इंश्योर कि आपको राइटर की बायोग्राफी पहले बताई जाए, फिर उसके मेजर वर्क्स को डिटेल में पढ़ाया जाए, क्योंकि मेजर वर्क की डेप्थ से क्वेश्चन आता है, एंड देन उनके माइनर वर्क्स के नाम और अगर कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस माइनर वर्क का, तो वो बताया जाए. सिमिलरली अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, सो इंश्योर कि हर मेजर राइटर के लिए आप ये तीनों चीजें करें. इन डेप्थ बायोग्राफी उसकी पढ़ें, उसके मेजर वर्क्स को डिटेल में पढ़े. अभी आज हम देखेंगे काफी सारे क्वेश्चन मेजर वर्क से आए हैं और मेजर वर्क्स के बहुत छोटी छोटी डिटेल से क्वेश्चन पूछे गए. बट दिस टाइम आई वाज शॉक्ड टू सी specifically in shift 1 के पेपर में that a lot of questions were asked from मेजर राइटर्स के माइनर वर्क से. सो यू कैनॉट स्किप द माइनर वर्क्स. आपको माइनर वर्क्स उनके याद करने ही हैं. जस्ट लाइक नजीम इज़कील का जो क्वेश्चन आया है. Okay, so Nazim Ezekiel, question number 7, again repeating, is a question from minor works of Nazim Ezekiel, जिनके titles आपको पता होने चाहिए. All those who are a part of my online course, please ensure कि जब मैं writers के minor works बता रही हूँ, so उन सभी को आप याद करें. आपको PDF में जो भी minor works के नाम दिए जाते हैं, you have to memorize them. Okay, coming on to question number 8, very very simple question जो काफी लोगों को problem आई. सो जो लोग मेरे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है, दे नो कि मॉड्यूल नंबर 6 लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है, उसके अंदर जब हम एनलाइटनमेंट एज के आपको क्रिटिक्स पढ़ाते हैं, सो जॉन लॉक को हम पढ़ाते हैं. जॉन लॉक का क्वेश्चन है टैब्यूला रासा, विच इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि जब एक बेबी पैदा होता है तो उसका ब्रेन इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट. उस पे धीरे धीरे वो सारी लर्निंग्स इम्पोज होती है. सो दिस कॉन्सेप्ट इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ये जॉन लॉक एक बहुत माइनर क्रिटिक है, जो काफी लोग, जब आप लोग क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो आप लोग प्लेटो, एरिस्टोटल एंड काफी और क्रिटिक्स लाइक मैथ्यू आर्नल्ड को पढ़ते हैं, उनका टचस्टोन मेथड और ये सब पढ़ते हैं, बट यू फॉरगेट टू रीड द माइनर क्रिटिक्स. एंड इस बार माइनर क्रिटिक्स से बहुत क्वेश्चंस आए. इस बार दे डिड नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम फिलिप सिडनी, बट देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम जॉन लॉक, देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम थॉमस हॉब्स. आगे हम देखेंगे. सो माइनर क्रिटिक्स को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें आप. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर दोस्त जिन्होंने ये मॉड्यूल में से ये लेसन स्किप नहीं किया था. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, मार्गरेट एटवुड, we all know, a very very famous Canadian writer, जिसे those who are a part of online course we teach in Canadian writers under post colonial writers. So post colonial writers chapter number 21, module 3, post colonial writers chapter 21 में lesson number 4 और 5 I think है. I'll just check. Post-colonial literature is module number 3. उसके अंदर there is Canadian writer chapter 21 and lesson number 2 is Margaret Atwood. इनके यहाँ से question आया है. So Margaret Atwood से question है which of the work is not written by Margaret Atwood. So again आपको सारे नाम पता होने चाहिए, जिनमें से the work which is not written is Stone Angel.
Okay, I would just want to know from you guys if you know who has written it. Yes, Pradeepa has already given the right answer. It is written by Margaret Lawrence. Okay, so Margaret Lawrence, again, lesson number 7 कैन कनेडियन राइटर्स में ही हम पढ़ाते हैं मार्गरेट लॉरेंस. आप लोग जिनको भी पता नहीं है ये लेसन एंड चैप्टर्स में जो बोल रही हूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ऑनलाइन कोर्स जो मैं देती हूँ, एंड दिस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द वेबसाइट. सो अगर आप खुद की सेल्फ प्रिपरेशन करें तो प्लीज इंश्योर कि वो जितने भी राइटर्स के नाम मैंने वहां लिखे हैं उन सबको आप ढंग से पढ़ें. ओके, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 11, एज रिलेटेड क्वेश्चन, chronological order, जिसमें सब लोगों को बहुत दिक्कत आती है. Now I'll tell you how easy it is to solve this question. So the question says, arrange the correct chronological sequence in which the following texts were published. Okay. Now जितने भी works है आप देखिए, Old Wives' Tale, Time Machine, Tess of the D'Urberville, Kim and Portrait of an Artist as a Young Man. Now you know कि ये Victorian modern का रेंज है. सो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको क्रोनोलॉजी पता है कि कौन से राइटर ने ये वर्क कब लिखा था, कौन से वर्क्स इसमें से विक्टोरियन एज के वर्क्स हैं, कौन से मॉडर्न एज के वर्क्स हैं और कौन से अर्ली मॉडर्न एज के वर्क्स हैं. सो अगर आपको वो सीक्वेंस भी पता है ना कि कौन सा राइटर पहले बॉर्न हुआ था, कौन सा बाद में बॉर्न हुआ था, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट इवन नोइंग द पब्लिशिंग डेट्स. ओके, सो जैसे आपको पता है कि टेस इज डेफिनेटली अ विक्टोरियन एज वर्क. ओके, टेस ऑफ द डर्बरविल, अगेन सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू हु आर watching this live right now, who has written the work Tess? I want the answer in next 5 seconds. I know this is a very very simple question, but just want to know who all know who has written Tess and who has written Kim. Yes, absolutely, Mayu. Thomas Hardy has written Tess, and who has written Kim? ओके, थॉमस हार्डी के ही आंसर्स आ रहे हैं. आई एम आस्किंग किम किसने लिखा है? किपलिंग, एब्सोल्युटली विवेक, राइट. सो अब आप देखिए, अगर आपको क्रोनोलॉजी पता है कि थॉमस हार्डी पहले आए थे एंड देन लेटर स्टेज पे किपलिंग आए, सो यू कैन ऑटोमेटिकली पुट देम इन द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इवन व्हेन यू डोंट नो द पब्लिशिंग डेट. ओके, ग्रेट. Moving ahead to question number 12. Who among the following argued that children learn language based on behavioral reinforcement principles by associating words with meaning? This is a very very simple question जो psychoanalytical theory के अंडर आता है. So जब हम सिगमंड फ्रॉइड एंड स्किनर को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि कैसे स्किनर का ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को एप्पल क्या है नहीं पता होता. एप्पल को वो एक इमेज से, एक वर्ड से एसोसिएट करते हैं, एंड बार बार जब एक छोटा बच्चे को उसकी मदर बोलती है कि तुम पानी पियोगे, देन ही एसोसिएट्स दैट ओके ये जो सब्सटेंस है इसे पानी बोला जाता है, राइट. सो दिस इज हाउ learning happens at the very early stage of child development. This is a question from the psychoanalytical theory. Module number 7, for those who are a part of online course, module 7 के अंदर we have a separate chapter where we talk about the psychoanalytical school of criticism, chapter number 47, जिसमें ये पढ़ाया जाता है. Coming on to question number 13. Which of the following works have been authorized by Thomas Carlyle? Now, again, something that we don't study. आपको पता है यूजीसी नेट के कोर्स में जो सिलेबस यूजीसी नेट ने प्रिस्क्राइब करा है उसमें पोएट्स, fictional writers and non-fictional writers, which includes essayists. ये भी है. So poets है, dramatists है, fictional writers who are basically novelists, and non-fictional writers who are essayists. Essayist भी है. So this is coming from essayist. Thomas Carlyle was an essayist. आप module number 1, chapter 10, Victorian age में lesson number 30 is a lesson on Thomas Carlyle where we talk about the essays written by Thomas Carlyle, जिसमें उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी है. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें थॉमस कार्ले की, तो चार्टिज्म इज समथिंग दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट. देन एक है उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है विच इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, वेयर ही टॉक्स अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में, एंड व्हाट ही थिंक्स अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, विक्टोरियन एज में एज वी ऑल नो कि अगर आप उस एज का बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, एंड उसने काफी सारे एसेइस्ट एंड ऑथर्स को इंस्पायर करा था विद आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फेडरेशन एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहां से ये क्वेश्चन आया है. ओके,
सो थॉमस कार्ले इज अनदर इम्पोर्टेंट एसेज जो आपको मिस आउट नहीं करना है। काफी लोग जो मेरे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है, दे थिंक कि अच्छा अर्पिता मैम ने विक्टोरियन एज में नॉवेलिस्ट पढ़ाए हैं, पोएट्स पढ़ाए हैं, ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, एसेइस्ट हम छोड़ के विल मूव डायरेक्टली टू द मॉडर्न एज। गाइज यू कैन नॉट डू दैट। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आप गलत नहीं करते अगर आपने एसेइस्ट वाले सारे लेक्चर्स पढ़े होते। Okay, so if we talk about essayists in the Victorian age, let me just tell you quickly the names of the essays from the list जो आपको पढ़ने हैं for the next exam as well. Okay, so Victorian age is module number 1 का chapter 10 जिसमें आप novelist and poets के बाद में जाएंगे. So you will find 7 essays जिनके बारे में मैंने बात करी है. One is Macaulay जिन्होंने minutes वाला work लिखा है. Then is Thomas Carlyle, then is John Ruskin, Matthew Arnold, J.H. Newman, Walter Pater and Oscar Wilde. इन सभी को पढ़ना बहुत important है. You cannot skip on any of them. Now coming on to question number 14, which is habitus, a very simple concept. ये पूरा लिटरेरी थियरी से है एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर आपने एक राइटर के बारे में पढ़ा होता, एक टॉपिक के बारे में पढ़ा होता, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लिटरेरी थियरी, तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करते। तो मैं आप सभी को यही बोलूंगी, प्लीज डोंट वरी अबाउट द फैक्ट दैट लिटरेरी थियरी इज हार्ड। एक बार पढ़ने की कोशिश करिए फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम टीचर्स, जहां से आपको समझ आता है, एंड देन ट्राई टू सी वेदर इट इज एक्चुअली हार्ड या आपके दिमाग का ये मिथ है। काफी लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के बोलते हैं बाप रे दिस वाज आउट ऑफ द सिलेबस। इट वाजंट आउट ऑफ द सिलेबस। आप ये पेरे बॉल्जुआ का जो वर्क है हैबिटस, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, आप अगर ये राइटर को सर्च करेंगे मेरे मॉड्यूल नंबर 7 में, यू विल सी दिस राइटर। जितने भी लिटरेरी थियरी के अंदर से राइटर्स आए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट जिन जिनको ये राइटर्स या ये क्वेश्चंस देख के हार्ड लगा है, जस्ट गो टू मॉड्यूल नंबर 7, कंट्रोल F दबाइए अपने लैपटॉप पे उस मॉड्यूल को खोल के, एंड जस्ट सर्च द नेम ऑफ दीज राइटर्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। आप देखेंगे सारे राइटर्स अलग अलग लिटरेरी थियरी के अंडर हैं और ये सभी राइटर्स रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इसीलिए ये हमारे ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा है। सो प्लीज डोंट थिंक कि ये राइटर आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स जो लिटरेरी थियरी स्किप करते हैं, उनको आधा पेपर आउट ऑफ सिलेबस लगेगा। द क्वेश्चन पेपर इज नॉट आउट ऑफ द सिलेबस। The only problem is that you have not studied those writers, and hence those writers are very very unfamiliar to you. Okay, okay, let's move on to the next question, which is I hope आप लोग सब मेरे क्वेश्चन पेपर के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। Okay, because most of you would just leave this live if you don't know मैं ये कहाँ से बता रही हूँ। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस दे रही हूँ, the question paper is available in the pinned chat. आपको सिर्फ जाके गूगल फॉर्म भरना है, and once you submit the form you'll get the PDF of the question paper. You can download it, open it in a different mobile phone. From one mobile phone you can just watch the YouTube live, and from another device you can look at the question paper. So we are right now at question number 17, which is again a publication date chronology based question. Again, see, this entire question is can be easily answered by anyone who knows the different ages these texts belong to. So literary history आप सबको पता है, पहले एलिजाबेथन पीरियड है, फिर रेस्टोरेशन है, फिर विक्टोरियन, फिर रोमांटिक है, फिर विक्टोरियन है, फिर मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है। वी ऑल नो दिस। इफ यू नो जो राइटर्स अलग अलग लिटरेरी एजेस के हैं and you know the names of their works, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। Okay, so this question has 5 critics. Okay, 5 critics के 5 works. सबसे पहले essay of dramatic poesy, second is lives of the poets, third is preface to lyrical ballads, romantic age, then is culture and anarchy, Matthew Arnold, Victorian age, and last is a room of one's own, Virginia Woolf, modern age. पांचों वर्क्स 5 अलग लिटरेरी एजेस से। तो अगर आपको एजेस पता है और राइटर्स पता है कि कौन सा राइटर किस एज में था, फिलिप सिडनी कौन सी एज से था, सैमुअल जॉनसन कौन सी एज से था, मैथ्यू आर्नल्ड कौन सी एज के था, तो आप आराम से बिना पब्लिकेशन डेट जाने इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आगे भी हम देखेंगे बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आंसर्ड वेरी इजीली इफ यू नो द डिफरेंट एजेस द वर्क्स आर फ्रॉम। You don't need to remember the writers. That is the reason why I always tell students कि please, whenever you are preparing for UGC NET, even if you're preparing from my course
or you're preparing on your own, please refer to the module wise syllabus and the chronological sequence in which I've given the lessons. सेम सीक्वेंस में आपको अपने नोट्स बनाने हैं. अगर आप मेरे लेक्चर से सुन रहे हैं तो भी सेम सीक्वेंस में पढ़ना है, सेम सीक्वेंस में रिवाइज करना है. अगर आप खुद से प्रिपरेशन करें तो भी रेफर टू दैट फ्री सिलेबस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द same order so that you don't get confused on the day of the exam. Moving on to question number 8. Again, match the following का question है. Now, match the following में इसमें there are 4 writers, Humayun Kabir, Bhabani Bhattacharya, Manohar Mangalorkar, and Kamala Markandeya. Now, in our course, we will only, making you study the last 2 writers, Manohar Mangalorkar and Kamala Markandeya. We were not teaching the first 2. Okay, आप ये question solve कर सकते हैं even if you know 2 of them, so not a problem. But for questions like these, कई बार स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं बिकॉज देर आर सो मेनी माइनर राइटर्स जहां से वो क्वेश्चन देते हैं. इफ वी स्टार्ट टीचिंग ऑल द माइनर राइटर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर, सो दे विल फाइंड यू विल फाइंड दैट देर आर मोर देन 500 लेक्चर्स. नाउ 500 लेक्चर्स आप इंडियन लिटरेचर के नहीं पढ़ेंगे. सो व्हाट वी डू जनरली इज दैट वी गिव यू लेक्चर्स जो रिपीटेडली आस्क्ड राइटर्स है वहां से. ओके, सो दीज 2 राइटर्स वर नॉट प्रेजेंट बट अदर 2 वर प्रेजेंट. अगर वो 2 भी आपको पता है तो आप आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस चारों राइटर्स पता होने जरूरी नहीं है, 2 या 3 आपको पता है, यू कैन मैच द फॉलोइंग एंड गेट द आंसर. ओके, मूविंग अहेड. Right, let's move to question number. I am just picking up few questions जहां से मुझे आपको किस तरह से पढ़ना है उसकी एडवाइस देनी है, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर है. बार बार उन क्वेश्चंस पे जाके कोई मतलब नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 24, वेरी इंटरेस्टिंग. आइडेंटिफाई द वर्क्स रिटन बाय शेरिडन. ओके, नाउ रिचर्ड शेरिडन के इसमें से 2 वर्क्स हैं, बाकी वर्क्स नहीं है. नाउ रिचर्ड शेरिडन के बारे में जब बात होती है तो आप सब बोलते हैं कि रिचर्ड शेरिडन का स्कूल ऑफ स्कैंडल बहुत पॉपुलर है. हम तो वो पढ़ के गए थे, हमने रिचर्ड शेरिडन कवर किया एज अ राइटर, बट वी ओनली स्टडी द मेन वर्क. नाउ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वाज सेइंग यू, मेजर राइटर्स के माइनर वर्क्स के नाम पता होने जरूरी है. वैसे तो बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं शेरिडन ने, बट इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसके नाम पता होने जरूरी है, बिकॉज वो या तो कोई रेफरेंस की वजह से इंपॉर्टेंट हुए या उसने कोई इंपॉर्टेंट जॉनरा को टारगेट किया था इसलिए वो पॉपुलर हुए. सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो सकता था अगर आपने रिचर्ड शेरिडन का सिर्फ स्कूल ऑफ स्कैंडल को डिटेल में नहीं पढ़ा होता, बट उसके माइनर वर्क्स के टाइटल्स को भी याद किया होता. ओके, सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक. बी very vigilant when you are looking at any major writer. उसके मेजर वर्क्स को तो डिटेल में पढ़ना ही है, साथ में उसके माइनर वर्क्स के टाइटल्स को याद करना है. ओके, मूविंग अहेड. इसमें से ये ओके, जस्ट लुकिंग एट दिस, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये इसका टाइटल याद करना बहुत जरूरी है बिकॉज 2 साल पहले इसी पे क्वेश्चन आया था. ऐसा ही क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द वर्क्स रिटन बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ, एंड उसमें सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड था. सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इज अ वर्क रिटन बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ. ओके, सो ऑलिवर गोल्डस्मिथ अगेन इंपॉर्टेंट प्ले राइट, बट नॉट जस्ट द मेजर वर्क्स, आपको माइनर वर्क्स के टाइटल याद करने हैं. मूविंग अहेड. ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग. चारों लिस्ट सेकंड के चारों राइटर्स, W.H. Auden, Lewis McNeice, Stephen Spender, and Christopher Isherwood. All 4 are very important modern and postmodern poets जो हम लोग मॉड्यूल 1 में पढ़ाते हैं, राइट? सो ये चारों राइटर्स के 4 इंपॉर्टेंट पोएम्स दी है जिन्हें आपको मैच करना है. आपको हो सकता है इनमें से सब W.H. Auden पता हो. जिन लोगों ने भी जो प्रेपरेशन करी है वो सिर्फ कोई गाइड बुक से करी है या सिर्फ कोई नॉर्मल राउटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या विलियम जे लॉन्ग पढ़ा है, सो उसमें ये तीनों राइटर्स का पोएट्स का मेंशन नहीं होगा बिकॉज दे आर जस्ट टारगेटिंग द मेजर वंस. सो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है. अगेन आई टेल यू, मॉड्यूल 1 में जस्ट गो टू माय वेबसाइट arpitakarwa.com, कंट्रोल F दबाइए, सर्च लुइस मैकनीज, स्टीफन स्पेंडर, क्रिस्टोफर ईशरवुड. हमने तीनों राइटर्स मेंशन करे अलॉन्ग विद W.H. Auden. सो अगर मेरे सिलेबस में कोई भी राइटर मेंशन है, यू कैन नॉट लीव इट बिकॉज हो सकता है वो पिछले साल नहीं आया हो बट इस साल आएगा. From that pool of 2000 writers that we are teaching, questions आते हैं. That is why I always say, please don't miss out on normal writers. आप अगर मेरे कोर्स से भी पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचेंगे अच्छा W.H. Auden तो मैं पढ़ लेता हूँ, important है. Stephen Spender तो अर्पिता ने ऐसे ही डाला होगा, let me skip. Don't skip it. If I'm putting that, it is because of some reason. There are around 5,000-7,000 writers जिसमें से हम pick and choose करके आपको selective 800 to 1000 writers पढ़ाते हैं
Why? Because उनकी probability 95% है to appear in the paper. So don't try to skip a few in that list. जो list हम दे रहे हैं that is a complete list. उसके अलावा मत पढ़िए, but वो तो आपको पूरी पढ़नी जरूरी है. Okay. Okay, moving ahead. Right. So now let's look at question number 26. Again, a match the following list based question, which is coming from literary criticism. So literary criticism, as I always say, there are 25 critics that you should study. उनमें से ही 4 critics से उन्होंने question पूछे. 4 critics है, उनके 4 literary criticism के अंदर उन्होंने जो terms दिए थे वो है जैसे willing suspension of disbelief, egoistical sublime, touchstone, pleasures of the imagination. Okay. So उनको आपको लिस्ट मैच करना है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, cannot be a more easy question from literary criticism. So अगर आपको ये नहीं आया है, that means your preparation is not right. It is not that the paper was hard. It is just that जो questions की मैं बात कर रही हूँ वो ऐसे questions है जो एक नॉर्मल यूजीसी नेट प्रेपरेशन करने वाले स्टूडेंट को आने चाहिए. सो अगर इन क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, दैट मीन्स देयर इज अ फ्लॉ इन योर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी एंड यू नीड टू वर्क अपॉन दैट. ओके, देन देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच हम लोगों ने भी नहीं पढ़ाया था, व्हिच इज द क्वेश्चन नंबर 28. Zeugen Habermas से क्वेश्चन आया है and we did not teach it. This is a very new concept. So this was a question that was not there in our online course. Then there's a question number 29, 7 types of ambiguity. Literary theory शुरू होते ही जब हम न्यू क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो this is the first very important topic that we teach. Very very important, पता होना बहुत जरूरी है. Very direct question. Then question number 30, again 4 writers: George Meredith, George Eliot, Charlotte Bronte, William Makepeace Thackeray. 4 of them, 2 of them are very very well known: George Eliot, Charlotte Bronte. George Meredith कई लोगों को पता होता है, William Makepeace Thackeray कई लोगों को पता होता है, but चारों बहुत important Victorian novelist हैं and चारों के माइनर वर्क से क्वेश्चन है. ओके, सो अगेन जॉर्ज इलियट का अगर आपने मिल ऑन द फ्लॉस पढ़ लिया है, एडम बीट पढ़ लिया है, आप सोच रहे हैं हाँ मैंने पढ़ लिया, शार्लेट ब्रॉन्टे का जेन आयर पढ़ लिया एंड आई एम डन. नो, यू नॉट डन. दिस इज यूजीसी नेट गाइज. इट इज नॉट दैट सिंपल. वो जॉर्ज इलियट से क्वेश्चन पूछेंगे बट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम जॉर्ज इलियट. दे विल आस्क अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. नाउ ट्रिकी क्वेश्चन कैन ईदर बी अ वेरी माइनर डिटेल फ्रॉम अ मेजर वर्क लाइक मिल ऑन द फ्लॉस के कोई एक कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे अभी आगे हम देखेंगे जॉर्ज इलियट का एक बहुत माइनर वर्क से मेजर वर्क से एक बहुत डेप्थ क्वेश्चन है, या फिर जॉर्ज इलियट के एक माइनर वर्क का नाम पूछ लेंगे. सो अगेन माइनर वर्क्स के सारे नाम पता होने जरूरी है. इसीलिए व्हेन वी आर टीचिंग, आप जो हमारे लेक्चर्स हैं उसको एक बार देखिए एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं. इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, try to follow that strategy, try to make notes like that, where we are teaching the biography first, all important things which are a part of biography, then we talk about the major works in detail, characters, themes, symbols, storyline, important references, and then we go to the minor works जिनके subtitles आपको बताए जाते हैं, important references बताए जाते हैं. Why is that minor work important? Because there are writers जिन्होंने 50 novels लिखी है. 2-3 of them are very famous, rest all of them are minor works. Now उन 47 को याद नहीं करना है, उनमें से कुछ सेलेक्टिव 4-5 को याद करना है जो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखती थी इन दैट राइटर्स लाइफ. दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग दैट. सो वो 4-5 पिक करना गेट्स वेरी ट्रिकी. और ये माइनर वर्क्स आपको कोई भी गाइड बुक्स में नहीं मिलते हैं, आपको कोई भी नॉर्मल सोर्सेस पे नहीं मिलते. यहाँ पे आपको पास्ट ईयर पेपर्स का हेल्प लेना पड़ता है. यू हैव टू सी कौन से वर्क्स रिपीटेडली आ रहे हैं एंड दैट इज हाउ यू मेक योर ओन नोट्स. ओके, सो इससे आप समझिए कि आपको जॉर्ज इलियट, शार्लेट ब्रॉन्टे का भी क्या क्या पढ़ना है. सिर्फ पेपर डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि ये देखना कि इस साल क्या पेपर में क्वेश्चंस आए, ये देखना कि आपको आगे इन राइटर्स को किस तरीके से पढ़ना है. ओके, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 31. अगेन क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन है. एरिस्टोटल, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट, फिलिप सिडनी, 4 मेन क्रिटिक्स. चारों के सिंपल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पूछा गया है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी डायरेक्ट. अगर ये आपको नहीं आ रहा है दैट मींस क्रिटिसिज्म नहीं आता है आपको. दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इजी. ये तो आपको आना ही चाहिए. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following fictional works form a trilogy of Mulk Raj Anand?
Now there are 5 works given. Again, मुल्कराज आनंद very important Indian writer. हम क्या पढ़ते हैं उनका मेन वर्क अनटचेबल, जो मोस्टली हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है. क्या क्वेश्चन आया? उनकी एक ट्रायोलॉजी है जिनके तीनों बुक्स के नाम आए. ट्रायोलॉजी मीन्स अ सीरीज ऑफ 3 बुक्स. उन तीनों बुक्स के नाम दे दिए एंड पूछा गया कि इन 5 में से कौन सी वो 3 बुक्स है जो ट्रायोलॉजी फॉर्म करती है. अगेन इंपॉर्टेंट, मुल्कराज आनंद बायोग्राफी इंपॉर्टेंट, अनटचेबल का स्टोरी इंपॉर्टेंट, माइनर वर्क्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है. ओके, ये आपको याद करने बहुत जरूरी है और ये ऐसे याद नहीं होंगे. आपको इनके लिए कुछ अच्छे से लिंक्स बनाने पड़ते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस याद करने होते हैं सो दैट आपको ये दिमाग में याद रहे. बिकॉज सिर्फ मगअप करने से, रट्टा मारने से यू विल नॉट रिमेंबर इट फॉर अ स्पैन ऑफ 6-8 months. ओके, moving ahead to question number 33. Name of goddess in Kanthapura. Okay, now again, Kanthapura very important work. इसके इन डेप्थ से क्वेश्चन आया है. उस वर्क के अंदर एक गॉडेस का नाम मेंशन है, वहां से क्वेश्चन है. ये लोग ये नहीं पूछेंगे कि कंथापुरा वर्क इज रिटन बाय हूम. दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी बेसिक थिंग. उनको लगता है कि ये फर्स्ट क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए जो इंग्लिश लिटरेचर का यूजीसी नेट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है. दैट वाज स्टेप 1. वो नहीं पूछेंगे. दे विल आस्क यू अ डिफिकल्टी ऑफ 8, 9, 10 की डिफिकल्टी का क्वेश्चन पूछेंगे, विच इज कि एक मेजर वर्क के अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम या कोई बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड में से क्वेश्चन. सो अगर आप कोई मेजर वर्क्स भी पढ़ रहे हैं, उनके इन डिटेल्स को नोट करिए. सिर्फ समरी पढ़ के नहीं होगा. स्टोरी क्या थी ये पता, स्टोरी नहीं पूछेंगे. दे विल नॉट गिव यू अ स्टोरी एंड आस्क यू कि ये स्टोरी कौन से वर्क की है. नो, दे विल आस्क यू अ इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट जो आपको बहुत बारीकी से अपने नोट्स में लिखना है. एंड दैट इज व्हाट वी डू. जब हम लोग भी पढ़ाते हैं, आप लोगों को मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ, प्लीज मेरे डेमो लेक्चर्स एक बार देखिए जिससे आपको समझ में आए कि आपको खुद कैसे अपनी प्रेपरेशन करनी है. इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग द कोर्स, यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, प्लीज डोंट टेक अ रॉन्ग पाथ जिसकी वजह से आपको 6 months बाद रिग्रेट हो. सो प्लीज डेमो लेक्चर्स देख के समझिए कि जब हम आपको कोई भी नॉवल पढ़ा रहे हैं, कोई भी प्ले पढ़ा रहे हैं, तो उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको नोट करवा रहे हैं. वो चीजें आपको अपने एंड पे जो भी वर्क्स आप पढ़ते हैं उनमें याद रखनी होगी. ओके, moving ahead to question number 34. Again, a very direct question. फर्दिनांद सशौर से क्वेश्चन है. सशौर, एज यू ऑल नो, स्ट्रक्चरलिज्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड राइटर हैं. वो कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? ही वाज फ्रॉम जेनीवा. सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्दिनांद सशौर के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको उनकी बायोग्राफी पढ़नी भी जरूरी है. यू शुड नो सम बेसिक डिटेल्स. वहां से भी क्वेश्चन आता है. फर्दिनांद सशौर ने क्या कॉन्सेप्ट्स दिए? सिर्फ कॉन्सेप्ट को साइंस सिग्निफायर पढ़ के नहीं होगा. यू नीड टू नो द बायोग्राफी, यू नीड टू नो द नेम्स ऑफ द वर्क्स जहां से जिन वर्क्स में ये कॉन्सेप्ट मेंशन है. एंड यू नीड टू आल्सो नो द कॉन्सेप्ट. जैसे हैबिटस से क्वेश्चन आया व्हिच वाज अ कॉन्सेप्ट. अभी फर्दिनांद सशौर की बायोग्राफी से क्वेश्चन आया कि उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए थे. देन अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था क्वेश्चन नंबर 11 या समथिंग, जिसमें 4 क्रिटिक्स, 4 थियरिस्ट के नाम थे, उनके 4 वर्क्स के नाम थे. यू हैड टू मैच. सो ये सब कुछ आपको एक राइटर के बारे में पढ़ना है. सिर्फ एक या दो चीज पढ़ के आगे मूव करना will not work. Okay, just want to know from you guys if I am audible and if everything is working fine, because I was just going in the flow and I stopped interacting with you guys. So just want to know from you guys if everything is working fine. You guys are following the sequence in which I'm telling you all the questions. If I can just see a few comments, we can proceed further. Great. Pradeepa says yes, everything is audible. General Breeze says everything is audible. Great. So I can go ahead, right? Okay, moving ahead to next question, which is question number 35. Now 35 इसमें जो writer mentioned है, we did not teach that. हमने इसके एक option के जो अघा शाहिद अली हैं उनको हम cover करते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स में. बट द अदर राइटर्स वी डिड नॉट. सो दिस इज समथिंग दैट वी did not study, but again did not teach. But again, the same thing, there are so many Indian writers से questions वो लोग पूछते हैं that at times it becomes difficult to select कि कौन से ऐसे हैं जिनसे बार बार आएगा. So we focus on the ones जिनसे repeatedly questions आते हैं. And as I always say, please don't feel depressed अगर आप 100 में से 20 questions सही नहीं कर पाए हो. नेट का पेपर ऐसे डिजाइंड होता है that they deliberately give 20 questions every year out of 100, which are very very difficult and which they want students to not answer correctly. Okay, वो ऐसे out of syllabus questions पूछते हैं जिससे कट ऑफ
70-80 से नीचे ही रहे, 95-100 कट ऑफ नहीं जाए। दैट्स अ स्ट्रैटेजी। इवन यूपीएससी के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, यूपीएससी का जो ऑल इंडिया रैंक 1 होते हैं, वो आउट ऑफ 2000 यूपीएससी में 950 के ऊपर स्कोर नहीं कर पाते। सो ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक 1 डिड नॉट स्टडी इनफ फॉर द यूपीएससी एग्जाम, बट द पेपर इज डिजाइन लाइक दैट कि वो बहुत ही लो रैंकिंग करते हैं, सिमिलरली लाइक दैट। सो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस है तो डोंट वरी। ओवरऑल जो पेपर है उसमें अगर आपने 80% क्वेश्चन सही करे हैं, दैट मीन्स यू डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई वुड से अगर 70% भी सही करे, देन आल्सो यू डन अ फैंटास्टिक जॉब। ओके, moving ahead to question number 36. Sorry, at times I get like really uh okay, just a second. There was some issue with the software that I'm using. So I was on question number 35, right? Yeah. So 36 जो है, name of the father is a term famous by Jack Lacan. Then there's a 37th question, cultural theorist Stuart Hall. And 38th question, criticism के बारे में कि what is criticism in practical, affective, prescriptive, descriptive. And criticism को basically statement 1, statement 2 दिया and you have to answer. तीनों question directly literary theory में से है. Literary theory का ही part है cultural studies, so I never like considered it separate. Cultural theorist Stuart Hall also comes in literary theory, or you can separately study him under cultural studies. So ये तीनों questions directly theory से है. So अगर आपको ये hard लग रहे हैं, that means again something that you have not studied theory properly. And theory से 20-25 questions हर साल आते हैं. So you cannot miss out on theory and criticism both. Module number 6 and 7 of our online course, extremely important. अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, just go and check module number 7 के सारे writers. Syllabus is given on the website arpitakarwa.com free of cost. Just check that out. उन writers का list निकालिए and अपने आप से पढ़ाई चालू करिए. Okay, moving ahead to question number 40. For question 39 again, Noam Chomsky. Again, literary theory में से है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस नाम ऐसे हैं कि अगर आपने ये राइटर्स नहीं पढ़े हैं तो आपको लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस है। बट आई एम टेलिंग यू गाइस, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस है, मैं खुद आपको चला के बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये हम नहीं पढ़ाते हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इजी है, प्लीज बिलीव मी। अगर आपने एक्चुअली नेट के हिसाब से पढ़ाई करी है, ये क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। आप नॉम चॉम्स्की और जितने भी राइटर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, स्टुअर्ट हॉल, इनको आप मॉड्यूल 7 में कंट्रोल F करके डालिए, आपको दिखेगा कि ये सारे राइटर्स ऑनलाइन कोर्स में हम पढ़ा रहे हैं कितने सालों से, बिकॉज इनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 40। बेन जॉनसन के कौन से प्लेज नहीं है? फ्लावर्स फॉर लेटन speaking, the devil is an ass, Sappho and Theo, woman in the moon, and staple of news. Now again, Ben Jonson, very very important writer. क्या पढ़ते हैं हम उनका? Alchemist. Most of the time Alchemist play पढ़ के चले जाते हैं, बट बेन जॉनसन के माइनर वर्क्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो भी मेजर राइटर्स हैं उनके मेजर वर्क्स आपको पता होने चाहिए एंड माइनर वर्क्स भी पता होने चाहिए, राइट? सो सिर्फ वॉलपोल, एल्केमिस्ट, एवरीमैन इन हिज ह्यूमर पढ़ के नहीं होगा। माइनर वर्क्स की भी लिस्ट बनाइए वहां से। इस बार पूरे पेपर में माइनर वर्क से क्वेश्चन थे, जो वर्क्स आपको पता है वहां से आए नहीं, इसलिए आपको लगेगा मैंने बेन जॉनसन पढ़ा, मैंने एल्केमिस्ट, वॉलपोन पूरा पढ़ा, लेकिन तब भी मुझे बेन जॉनसन के क्वेश्चंस में कर नहीं पा रहा हूँ। आप को मैं एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बताती हूँ। whenever you are looking at any major writer, your first thing should be to look at his entire biography. उसके पॉइंट्स आप समराइज करिए। इवन हम लोग जब ऑनलाइन कोर्स में लेक्चर्स देते हैं तो फर्स्ट लेक्चर इज ऑलवेज बायोग्राफी, सेकेंड लेक्चर इज माइनर वर्क्स, ऑल द माइनर वर्क्स, उसके अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम बताते हैं, स्टोरी बताते हैं 2 से 3 लाइन में कि क्या स्टोरी है, सो दैट आपको याद करने में आसानी हो। एंड देन देयर आर सेपरेट वीडियोस फॉर मेजर वर्क। सो वॉलपोन पे एक वीडियो होगा, एक वीडियो एल्केमिस्ट पे होगा, एक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पे होगा। बट जो माइनर वर्क्स है वो सारे एक वीडियो के अंदर स्लाइड बाय स्लाइड हम आपको बताते जाते हैं कि इनको आपको सिर्फ इनके इतनी ही डिटेल याद करनी है ना। माइनर वर्क्स जो है उनको कभी भी डिटेल में मत पढ़ना। जिस लेवल पे आप वॉलपोन पढ़ोगे, उसका एक्ट वाइज समरी पढ़ोगे, उस लेवल पे आपको बेन जॉनसन के अदर माइनर वर्क्स को नहीं पढ़ना है। माइनर वर्क्स के सिर्फ नाम
और मैक्स टू मैक्स 2 लाइन की समरी, 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। कई लोग सोचते हैं कि हमको बेन जॉनसन पढ़ना है तो अब हम उसके सारे वर्क्स को उतने ही डिटेल में पढ़ेंगे। नो, दैट इज नॉट स्मार्ट वर्क, दैट इज जस्ट प्योर हार्ड वर्क। ओके, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू यील्ड यू रिजल्ट। सो बायोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोग्राफी के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट लाइक फर्डिनांड द स्टचौर ने कौन सी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज माइनर वर्क्स की छोटी छोटी सी समरी, 2-3 लाइन में, मेन मेन रेफरेंस पॉइंट। एंड देन मेजर वर्क्स को डिटेल में कैरेक्टर समझने हैं, उनका पूरा प्लॉट समझना है, इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस समझने, उसमें अगर कोई और राइटर का मेंशन है, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस क्या है, उसके अंदर अगर कोई और वर्क का मेंशन है, कोई और इंपॉर्टेंट सिंबल यूज किया गया है, वो सब पढ़ना है। दिस इज हाउ एवरीथिंग इज डन। ओके, मूविंग अहेड। मेरा गला सूखा है, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू ड्रिंक सम वाटर। I have this habit of speaking like really loudly. Okay, moving ahead, we have, where were we? We were at question number 40. Okay. Now, 41, a structured interview consists of. Now, this question is from research aptitude, but generally, this question is a part of paper one का syllabus. Interview and questionnaire और वो सब जहाँ पे बात करते हैं हम, tools of research methodology, tools of data collection, वहां से ये question है. I don't know why they have put it in paper two, but since research methodology is a part of paper two also, that's why maybe they have just asked this question in paper two. Moving ahead, question number 43, movement poets included, and 5 writers के नाम दिए. Now friends, most of my students ask me कि लिटरेरी मूवमेंट्स का हमारा एक अलग मॉड्यूल है जिसके अंदर हम सारे लिटरेरी मूवमेंट्स पढ़ाते हैं. ओके, आई जस्ट टेल यू द नेम्स ऑफ फ्यू क्रिटिकल लिटरेरी मूवमेंट जो आपको पता होने चाहिए. यूनिवर्सिटी विद Sons of Ben, metaphysical poets, then Enlightenment में आते हैं तो Kit Kat Club, Graveyard Poets, Romantic Age में Satanic School of Poetry, Dark Romanticism, Transcendentalism, Victorian Age में Pre-Raphaelite Brotherhood, Aestheticism, Fireside Poets, Oxford Movement, Realism, Naturalism, Impressionism, Symbolism, Imaginism, Surrealism, Modern Age में Rhymers Club, Irish Dramatic Movement, Auden Group, Georgian Poets, Haldean Renaissance, War Poets, Lost Generation, Bloomsbury Group, Stream of Consciousness, Black Mountain Poets, New Apocalyptics, Southern Agrarians, Postmodern में Black Arts Movement, Existentialism, Theatre of Cruelty, Epic Theatre, Angry Young Man, Kitchen Sink Drama, Theatre of Absurd, Theatre of Oppressed, Beat Generation, and Movement Poets. Now see, ये सारे पोएट्स और इन पोएट, ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के पोएट्स कौन थे, इन ग्रुप्स में किस टाइप का ट्रांसेंडेंटलिज्म का जो ग्रुप है उसमें क्या फिलॉसफी थी, ये सब आपको पता होना जरूरी है. इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं विच आर वेरी इजी. अगर आपने ये 40 पोएट जो मूवमेंट ग्रुप्स हैं इनको याद कर लिया तो आप इन क्वेश्चंस को 1 सेकंड में आंसर करके चले जाओगे. बट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे से कि यूजीसी नेट के सिलेबस में ये प्रिस्क्राइब नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे. प्रिस्क्राइब्ड हो या नहीं हो फ्रेंड्स, प्लीज लुक एट द क्वेश्चन पेपर, वहां पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 मूवमेंट पोएट क्वेश्चन आया है. आगे भी हम देखेंगे इन्होंने वापस एक मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा है. ओके, मूविंग अहेड. Who among the following are called Edwardian novelist? Again, see, movement से poet को question है. Literary movement जो है वहां से ये question आया. Then question number 46, love song of J. Alfred Prufrock names the following figures. Correct answer is Michelangelo and Hamlet. See, now love song of J. Alfred Prufrock, a very major work of T.S. Eliot. T.S. Eliot का Wasteland के बारे में the next important poem that you should be reading is Love Song of J. Alfred Prufrock. अब ये कभी भी ये नहीं पूछेंगे नेट में Love Song of J. Alfred Prufrock is written by whom? Because this is a very very downgraded question. सबको पता है कि ये T.S. Eliot ने लिखा है. What makes you stand apart is that आपने क्या वो पोएम पढ़ी है और उस पोएम में 2 important names of characters mentioned है, क्या आपको वो पता है, which is Michelangelo and Hamlet. इसमें another option is Walt Whitman. So Walt Whitman जिसने नहीं पढ़ा है J. Alfred Prufrock, हो सकता है उसको Walt Whitman पता हो because of some famous works written by Walt Whitman. तो वो सोचे हाँ let me just mark Walt Whitman is the famous writer, तो हो सकता है इस work में ये mentioned हो. This is not how it is done. J. Alfred Prufrock जब आप लिखते हैं, so you have to write down these key points when you are looking at the poem. It is not just कि आपको एक summary पता होने से हो जाएगा. References, बहुत close questions पूछे जाते हैं. Okay.
That is important. Moving ahead. Question number 47. Again, ग्राहम ग्रीन, डैनियल डेफो, जॉर्ज ऑरवेल, डोरिस लेसिंग, 4 मेन राइटर्स. इनके माइनर वर्क्स पूछे गए हैं. डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंडन, ग्रास इज सिंगिंग, जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, इन अ सॉर्ट ऑफ लाइफ. 4 माइनर वर्क्स. चारों माइनर वर्क्स हम पढ़ाते हैं जब हम लोग ऑनलाइन कोर्स में बात करते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है. कभी कोई राइटर से कब पूछ लिया जाता है, कभी मैच ऑफ फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, कभी नॉर्मल ग्राहम ग्रीन ने इनमें से कौन सा वर्क लिखा है ये पूछ लिया जाता है, या डैनियल डेफो में इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा जाए है ये पूछ लिया जाता है. सो प्लीज रिमेंबर, मेजर वर्क्स के, मेजर राइटर्स के माइनर वर्क्स पता होने बहुत जरूरी है. और ये चारों इंपॉर्टेंट ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के एक लिस्ट बनाए वर्क्स की, और उनके अंदर की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद करें. Okay, moving ahead to question number 49. Which two of the following plays have been written by Edward L.B.? Now, Edward L.B. again is a very important American writer, I would say. Not very, very important, but not ekdami bekar. Somewhere in the middle, I would keep him. He is very important in terms of the works he has written. इनका एक बहुत ही famous work है, which is Zoo Story, which you should be reading. वो इस बार question में पूछा गया है. And A Delicate Balance पूछा गया है. So again, अमेरिकन राइटर्स भी आप पढ़ रहे हैं. सपोज यू आर रीडिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का रोड नॉट टेकन पढ़ के नहीं होगा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की और इंपॉर्टेंट पोएम्स भी पढ़नी होगी. सिमिलरली एडवर्ड एलबी, आप मॉड्यूल 2 अमेरिकन लिटरेचर में सर्च करिए, कंट्रोल F करके, यू विल फाइंड दैट वी आर टीचिंग दिस राइटर, बिकॉज काफी टाइम से एडवर्ड एलबी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, सो अगेन पीपल से अमेरिकन लिटरेचर नहीं पढ़े क्या? देखो, क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ना नहीं पढ़ना इज अप टू यू. Okay. Oh, it's already around 1 hour and I'm still on question number 50. So I'm so sorry for moving so slowly, but I want to actually tell you कि किस तरीके से आपको क्या चीजें याद करनी है. You might feel कि मैं बहुत repeatedly एक ही चीज बोल रही हूँ, because आप देखिए questions repeatedly उसी तरह के आ रहे हैं. मेजर राइटर्स के माइनर वर्क से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि दिसंबर के एग्जाम में माइनर वर्क्स को स्किप मत करिएगा. Okay. Moving ahead to Thomas Hobbes' philosophical tract Leviathan was published in the year. Now, guys, कई लोग ने ये क्वेश्चन देख के बोला कि यार ये कौन सा राइटर है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. ही इज नॉट अ राइटर, ही इज अ क्रिटिक, जिन्होंने कई बहुत इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ एसेज लिखे हैं, जिससे मॉड्यूल नंबर 6 लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर जब हम जॉन लॉक को पढ़ते हैं, उसी के साथ में थॉमस हॉब्स पे लेक्चर है. यू कैन गो एंड सर्च मॉड्यूल नंबर 6 में. दिस राइटर इज प्रेजेंट सिंस 2018, जब से हम ये कोर्स दे रहे हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर या तो जॉन लॉक या थॉमस हॉब्स से क्वेश्चन आ रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये लोग जब स्टूडेंट्स क्रिटिस मॉड्यूल 6 मतलब यूनिट 6 क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, तो दे रेफर टू एरिस्टोटल, होरेस, फिलिप सिडनी, जॉन ड्राइडन, पोप्स, सैमुअल जॉनसन, and Keats, Coleridge, Wordsworth, but they skip some important Enlightenment age critics: Thomas Hobbes, John Locke, Giambattista Vico, Edward Burke, Edward Gibbon, Adam Smith. इन सब से क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज इंश्योर कि आप इन राइटर्स को मिस आउट ना करें. द रीजन व्हाई आई एम सेइंग द नेम्स अगेन एंड अगेन is because I want you to make a note of it. हो सकता है आपको मेरे pronunciation से समझ नहीं आ रहा हो जियाम्बितस का विस्को की स्पेलिंग क्या है. Just go to my website arpitakarwa.com. full course syllabus में module 6 में चाहिए. You will find the spellings and you can write down the name. Okay, moving ahead to question number 51. रेमंड विलियम, अगेन लिटरेरी थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, वहां से क्वेश्चन है. उनके वर्क्स को सीक्वेंस में लगाने को बोला गया. सो अगर आपने उनके वर्क्स को जिस सीक्वेंस में, जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं बताती हूँ, उसी ऑर्डर में याद किया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है. 52. हिज टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क एंड आर्बेस्क किसने लिखा है? नाउ 4 राइटर्स हैं अमेरिकन लिटरेचर के: हर्मन मेनविल, नाथनियल हॉथॉर्न, मार्क ट्वेन एंड एडगर एलन पो. नाउ ये वर्क हमने पढ़ाया नहीं है, बट आप इस वर्क का आंसर तब भी, इस क्वेश्चन को तब भी आंसर कर सकते हैं. कैसे? एडगर एलन पो की जब हम बायोग्राफी बताते हैं, जब उनके वर्क्स बताते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने डार्क रोमांटिसिज्म के टाइम पे लिखा था, एंड बहुत ज्यादा उनके जो वर्क्स है ना, वो बहुत डार्क एंड ग्रोटेस्क एंड हॉरर टाइप ऑफ सेटिंग्स में बेस्ड होते हैं. ओके, सो जब आप ये वर्क का टाइटल पढ़ते हैं, टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क एंड आर्बेस्क, आपको पता है ग्रोटेस्क वर्ड आ रहा है, नॉट
Edgar Allan Poe is linked with grotesque type of writing. So most probably the correct answer would be Edgar Allan Poe. This is how you make intelligent guesses. नेट के पेपर में 50% ऑफ द पेपर ऐसा होता है जो अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है, जो राइटर्स हमने मेंशन करे हैं वो सब पढ़े हैं, सो 50% पेपर आप आराम से दे सकते हैं. अराउंड 25% पेपर ऐसा होता है जो आप इंटेलिजेंट गेस वर्क करके 100% टाइम राइट कर सकते हैं. एंड 25% पेपर ऐसा होता है जहां पे आपको थोड़ा चैलेंज आएगा. कई वर्क्स ऐसे होते हैं जो कई बार हमने जो पढ़ाए हैं उसमें से आ जाते हैं. कई बार ऐसे होते हैं कि वो हमारे लिए भी अननोन होते हैं. वो ये लोग जानबूझ के कट ऑफ ड्रॉप करने के लिए डालते हैं. ओके, सो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट 75% पेपर आप आराम से आंसर कर सकते हैं. Moving ahead, I'll just move a little faster now. Moving ahead to question number. Okay, let me just skip a few questions just similar. Now, again, 54th number question. Greek tragedy. Milton seeks to adapt the form of Greek tragedy. किसमें? काफी लोगों ने बोला इसका आंसर गलत है, but नहीं, इसका आंसर सैमसन वाला ही पोएम है. Why is that so? Because अगर आप सैमसंग एग्नोस्टिक पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे एक चीज मेंशन्ड है, हम लोगों ने लेक्चर्स में भी बताई है कि ग्रीक ट्रेजेडी और हेब्रू विच इज बाइबल रिलेटेड क्रिश्चियन मिथ रिलेटेड चीजें उसको इसने क्लब किया है. तो ही हैज ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड क्रिश्चियन ट्रेजेडी, आई वुड से. सो ग्रीक ट्रेजेडी की काफी चीजें इन्होंने अडेप्ट करी है. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज दिस एंड नॉट पैराडाइज रीगेन्ड, लिसिडस और कोमस. Okay, moving ahead to question number 56. Thomas Aquinas का Aesthetics is written by whom? Umberto Eco, again a very important writer. Now, काफी लोगों को ये राइटर नहीं पता. दे आर लाइक कि ये राइटर का नाम तो हमने पहली बार सुना है. सो दोज ऑफ यू हु जस्ट स्टिक टू द ब्रिटिश लिटरेचर, हु डोंट एक्सप्लोर पोस्ट colonial, who don't explore European literature, Indian, अमेरिकन लिटरेचर, ये 4 लिटरेचर्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं ढंग से तो आपको ये राइटर्स अननोन ही लगेंगे. अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जिसके अंदर सारे आ जाते हैं. डायस्पोरिक आ जाता है, कैनेडियन, मैक्सिकन, सॉरी कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड अफ्रीकन, ये सारे आ जाते हैं. एंड देन वी हैव यूरोपियन लिटरेचर जिसके अंदर यूरोप की सारी कंट्रीज. इटालियन लिटरेचर आ जाता है, जैसे ह्यूमर्टो इको, ही इज अ पार्ट ऑफ इटालियन, ही इज एन इटालियन राइटर. ओके, सो वो आ जाते हैं. देन वी हैव different writers from different parts of European, the entire Europe. So you will also have to read different country के literature. You cannot just stick to British literature and think कि आपका हो जाएगा. आपको पोस्ट कॉलोनियल के भी अलग अलग देखने हैं, आपको यूरोपियन के भी अलग देखते हैं. तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस लेट मी टेल यू कि यूरोपियन में यू हैव टू लुक एट द ग्रीक लिटरेचर, जो एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर जिसमें होमर, ईसप एंड ये सब आते हैं. देन रोमन लिटरेचर जिसमें वर्जिल, Ovid, Seneca आते हैं. Then Italian literature, we have Dante, we have Italo Calvino, we have Umberto Eco, Lunghi, Prandello. Then we have Russian literature, Fyodor Dostoevsky, Leo Tolstoy, Anton Chekhov, Vladimir Nabokov, ये सब आते हैं. जर्मन है जहाँ पे बर्टोल्ट ब्रिज, थॉमस मैन, फ्रांस काफ्का, ये सब आते हैं. फ्रेंच है जहाँ पे गुस्ताव फ्लॉबर्ट, हॉनर डे बल्जाक, एमाइल जोला, अल्बर्ट कामू, मार्गरेट प्रॉस्ट, ये सारे आते हैं. एंड देन वी हैव अदर यूरोपियन राइटर्स जिसमें वी टेल यू हेनरिक इब्सन एंड जैक रूसो, ये सारे आते हैं. सो ये सब राइटर्स आपको पढ़ने हैं. हर साल इस लिस्ट में से, इस लिस्ट ऑफ 50 राइटर्स में से 2 या 3 राइटर्स आते हैं. सो इस बार इन्होंने क्वेश्चन दिया है यूम्बर्टो इको, सॉरी. Okay, moving ahead to the next. कोठारी कमीशन से क्वेश्चन है. अगेन दिस इज फ्रॉम इंग्लिश इन इंडिया. वेरी सिंपल. इंग्लिश इन इंडिया एक जो अलग ऐड हुआ था उसमें से एक क्वेश्चन इस बार आया है. देन क्वेश्चन नंबर 58, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. गोल्डन बॉ, ये वर्क किसने लिखा है? नाउ जेम्स फ्रेजर ने ये वर्क लिखा है. ये वर्क इवन मैं जब नेट की प्रेपरेशन कर रही थी, सो मैंने टॉप 10 रशियन राइटर्स, टॉप 10 अमेरिकन राइटर्स, इस टाइप से सर्च करके पूरी लिस्ट बना के पढ़ाई कर ली थी. बट ये राइटर मेरे तब भी पकड़ में नहीं आया था. जब मैंने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो मैंने देखा हर साल इस राइटर के एक ही वर्क से क्वेश्चन आया जा रहा है और आज तक आ रहा है. मतलब एवरी ईयर, आई डोंट नो हु इज सेटिंग द पेपर, बट दैट पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद दिस राइटर. गोल्डन बॉ वर्क जो है ये आप प्लीज नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 58 है. अगेन फॉर दोज ऑफ यू हैव जॉइंड लेट, आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन पेपर इज देयर in the
पिन कमेंट, आपको लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, आप उसे भर के डाउनलोड करके ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। एंड इस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 58 जो है, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और ये ऑथर जो है, इसको आप जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट टाइम देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। Okay, moving ahead to the next question, which is match the following. क्वेश्चन नंबर 59। चार इंपॉर्टेंट लिटरेरी थियरिस्ट के नाम है, जॉन क्रो रैंसम, एफ आर लीविस, आई रिचर्ड्स, क्लीनेथ ब्रूक। चारों के चारों न्यू क्रिटिसिज्म्स हैं। उनके चार नेम्स ऑफ चार वर्क्स हैं। सो अगर आपने ये चारों के ऑडियो लेक्चर्स मेरे सुने हैं, आई एम प्रिटी श्योर दिस वुड बी द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर यू in the entire paper. Moving ahead, arrange the correct chronological sequence of the publication of the text. Now, ये questions देख के most of the time what people do is that they are like, हमको तो याद ही नहीं है कौन से period में क्या dates लिखी. Now, I'll tell you the works. September 1, 1939, poem. Caller, Beppo, Paradise Lost, Seeing Things. 5 poems है, इनको chronologically डालना है. मुझे इन पांचों में से एक भी poem की date याद नहीं है. Still, I can very easily, within seconds, put them in the chronological order. कैसे? मुझे पता होना चाहिए पोएम लिखी किसने है. The caller is written by whom? If you guys can answer. John Donne, मेटाफिजिकल पोएट. सो रेनेसा के आसपास का पीरियड है, 1500 1600 में लिखी है, 1500 में, लेट 1500 में लिखी है. देन द नेक्स्ट वर्क इज पैराडाइज लॉस्ट. राइट आफ्टर एलिजाबेथन पीरियड, राइट आफ्टर एलिजाबेथन पीरियड वी हैव एज ऑफ मिल्टन. वहां पे से पैराडाइज लॉस्ट है. देन इज बेपो. बेपो इज रिटन बाय whom? If you guys can answer very quickly, Beppo is written by whom? Guys, I want the answer. Beppo is written by whom? Beppo is not written by Milton. Wrong, Pavitra. Okay, let me give you a hint. Beppo is written by somebody from the Romantic age. Byron, absolutely, Amir. So the right answer is Byron. So Beppo again, Milton के बाद में आ रहा है romantic period. So Beppo आ गया वहां से. Then the next work is September 1, 1939, which is written by a modern poet. Right, World War First start हुआ था उस time पे, मयूर. So ये September 1 आ गया. Last is Seeing Things, which is written by Seamus Heaney, which is a postmodern poet. So अगर आपको chronology याद है, history of English literature, क्या आपको ये poets याद है, so आप आराम से इसे डाल सकते हैं. Temina Khan, Dylan Thomas is the wrong answer. Beppo is written by Byron. Okay, moving ahead to 60. I'll just skip a few questions quickly. Beat generation, 63. क्वेश्चन नंबर 363. बीट जनरेशन लिटरेरी मूवमेंट में हम पढ़ाते हैं. अभी हमने देखा था लिटरेरी मूवमेंट से एक और क्वेश्चन आया था. 2 क्वेश्चंस आए थे, एडवर्डियन एज एंड अनदर वाज, आई थिंक देयर इज सम क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेरी मूवमेंट. 43. Question number 43 was from literary movement. Just a second. Movement poets. Okay. Movement poets के पूछे थे कि इनमें से कौन से movement poets हैं. Again a question came अभी जो आया है, which is on the from the literary movement, which is beat generation. So see, 3 question आ गए हैं literary movement से. अगर आपने एक हफ्ते लगा के, मैंने जो 25 लेक्चर्स दिए हैं वो पढ़ लिए होते, वो सुन लिए होते, और वो जो राइटर्स हैं उनके नाम याद कर लिए होते, ये तीनों क्वेश्चंस आपके सही होते, विच इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट, जैसे बीट जनरेशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट इट. तो यहाँ पे ये बहुत इन डेप्थ नहीं पूछेंगे, ये बहुत सरफेस लेवल पूछेंगे, इनमें से कौन से बीट जनरेशन के मेंबर नहीं है, सिर्फ इतना पूछेंगे. ओके, लेट्स मूव अहेड. Question 65. Francis Bacon, the advancement of learning was dedicated to. Now, Francis Bacon, very important essays. Advancement of learning उनका बहुत ही important work है. उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उन 6 पार्ट्स के कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है उसे किसे डेडिकेट किया गया है. ओके, सो जेम्स द फर्स्ट को डेडिकेट किया गया है. सो दिस इज हाउ आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क की इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स याद करने हैं. ओके, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 68, let's say. The character who discussed the relative merits of French drama and English drama in Essay of Dramatic Poesy. Now, Essay of Dramatic Poesy is a very important literary criticism का work, जिसे आपको डिटेल में पढ़ना है. इसलिए उसके अंदर के एक कैरेक्टर का नाम आपसे पूछा गया है, लिसिडियस, जो
मेरिट्स ऑफ फ्रेंच ड्रामा एंड इंग्लिश ड्रामा के बारे में, कि मेरिट्स को कंपेयर कर रहा है। सो देखिए, कोई भी मेजर वर्क है उसके बहुत डिटेल में जाके लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेजर वर्क को सरफेस लेवल से 2 लाइन की समरी पढ़ के नहीं होगा, वो चीज आपको माइनर वर्क्स के लिए करनी है। ओके, मूविंग अहेड, which is the correct chronological order? Again, Joseph Edison, Francis Bacon, Charles Lamb, Virginia Woolf, Matthew Arnold. Very very simple, चारों पांचों जो है वो अलग अलग एज से हैं। फ्रांसिस बेकन सबसे पहले है, देन उसके बाद में जोसेफ एडिसन है, जेन चार्ल्स लैम्प है। चार्ल्स लैम्प कब आते हैं? चार्ल्स लैम्प कम टूवर्ड्स प्री रोमांटिक्स के टाइम पे, देन प्री रोमांटिक रोमांटिक्स के टाइम पे, देन वी हैव मैथ्यू आर्नल्ड, एंड देन वी हैव वर्जीनिया वुल्फ। मैथ्यू आर्नल्ड इज विक्टोरियन एंड वर्जीनिया वुल्फ इज मॉडर्न। तो पांचों आपने तुरंत डाल दिए, कोई भी राइटर की आपको डेट्स याद करने की जरूरत ही नहीं हुई, सिर्फ क्रोनोलॉजी अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। Moving ahead, which among the following is true about Religio Lacey? Now, Religio Lacey is again one important work जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। जॉन राइडन का ये एक वर्क है जिसे मैं, इवन दो इट्स अ माइनर वर्क, यहाँ से बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं। सो अगर आपने पास्ट ईयर पेपर्स को फॉलो किया है तो आपने जरूर रिलिजियो लेसी बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो अगर आपने जॉन ड्राइडन को सही तरीके से पढ़ा है तो आपको आएगा ही आएगा। ओके, um, then there is a question, सैमुअल जॉनसन की बायो, सैमुअल जॉनसन से क्वेश्चन है, एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सैवेज सन ऑफ अर्ल रिवर्स वाज द फर्स्ट मेजर बायोग्राफी पब्लिश्ड बाय। नाउ वी ऑल नो सैमुअल जॉनसन इज नोन फॉर हिज biographies, so when we are reading Samuel Johnson we just don't have to read his biography, we have to biographical information, we have to also read some major biographies that he has written। वो minor works के नाम आपको पता होना जरूरी है, and this is how you can solve this question very very easily। Then there is a question. Yes, Adam in Adam Bede of George Eliot is a carpenter, doctor, teacher, mason. Now see, George Eliot ka Adam Bede is a very very important work. Just like we have Mill on the Floors, we have other works of George Eliot जहाँ से बार बार questions आते हैं. Adam Bede is also a major work. So यहाँ के character से question आएगा. It's a very detailed detailed study करना होगा ऐसे works का in order to solve these kind of questions. But I would again classify this as a very simple question. Adam Bede is something which is very very important for any net aspirant to read. So आपको इसका summary और characters पता होना बहुत जरूरी है. Then there is this question number 75. Arrange a correct chronological sequence of events that affected literary criticism and theory. See, मैं हमेशा जब आपको कोई भी एज पढ़ाती हूँ इन ब्रिटिश लिटरेचर, आई स्टार्ट विद द पॉलिटिकल, हिस्टोरिक, cultural background of that age. We look at all the major events that happened in that age. प्रोटेस्टेंट कैथोलिक रेवोल्यूशन अगर हुआ है, वॉर ऑफ रोजेस हुआ है, हेनरी द एथ के बारे में हम पढ़ते हैं। देन व्हेन वी कम टू एज ऑफ रेस्टोरेशन, हम ऑलिवर क्रॉमवेल के बारे में पढ़ते हैं, चार्ल्स सेकंड का सेकंड के बारे में पढ़ते हैं, रेस्टोरेशन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। देन व्हेन वी कम टू रोमांटिक एज, हम पढ़ते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन थे, उसके आइडियाज से कैसे रोमांटिक राइटर्स इंस्पायर हुए। वी ऑल्सो लुक एट Victorian age, then we look at industrialization, important acts that were happening, feminism कैसे कैसे spread हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हैं। जब तक आप ये चीजें नहीं पढ़ेंगे, आप इंग्लिश लिटरेचर के नेट में बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे। प्लस एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस कम फ्रॉम द इंपॉर्टेंट लिटरेरी इवेंट्स और हिस्टोरिक इवेंट्स दैट हैपन, जैसे एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, आई हैव अ ड्रीम, रशियन रेवोल्यूशन, इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कई बार ये लोग एक्ट्स बता देते हैं कि अच्छा कोई इंपॉर्टेंट उस टाइम पे एग्जीबिशन हुई है, ग्रेट एग्जीबिशन के बारे में पूछ लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। ओके, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 78. Debate on the condition of England question was initiated by Thomas Carlyle. Very very simple question, very direct question. अगर आपने थॉमस कार्ले को पढ़ा है in British literature, you can get this question absolutely right. Now, कोई भी बुक में आपको थॉमस कार्ले के बारे में नहीं मिलेगा। कोई भी गाइड बुक आप ले लो या ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, ये कुछ ऐसे राइटर्स है जो आपको अलग से ही पढ़ने होंगे। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम अगेन स्टेटिंग, please refer to the module wise list that I have given, and please ensure कि आप वो writers को अलग से पढ़ें। Okay, if you are a part of online course, you don't have to worry, उन सब पे detailed lectures हमने दिए हैं, so you don't have to go anywhere else.
Okay, moving ahead to the next topic, which is question number 80. In which novel of Jane Austen is Captain Frederick Wentworth a character? See, again, Jane Austen, very, very important novelist, so उनके सारे work की summaries और characters आपको पता होने चाहिए. Okay, moving ahead. Now, question number 82 हमने नहीं पढ़ाया था. Oxford Professor of Poetry Chair. This was something that I did not, teach my students. So this might be a very tricky question for them. Moving ahead to next question. Okay, which of the following playwrights have collaborated in writing the satire 3 Hours After Marriage? John Gay, John Dryden, Alexander Pope, William Congreve, and George Arbuthnot. Okay, so अगर आपने Alexander Pope, George Arbuthnot के बारे में पढ़ा है, I'm pretty sure आपको पता होगा कि that's the correct answer because Alexander Pope, John Arbuthnot, they all were connected, and along with John Gay, they wrote the satire. Okay, from which novel of Charles Dickens are the following lines extracted? 4 lines दिए हैं and they have asked the novels. Great Expectation, David Copperfield, Nicholas Nickleby, and Bleak House. Now see, again, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब मेजर वर्क्स पढ़ेंगे फॉर राइटर्स लाइक चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट, इन सब का आप जब पढ़ेंगे तो इनकी आपको इंपॉर्टेंट लाइंस पता होनी चाहिए और आपको इनकी राइटिंग स्टाइल पता होनी चाहिए सो दैट अगर कहीं बुक में से कोई भी 4 लाइनें दे दी तो आप पकड़ पाएंगे कि ये किसने लिखी है. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू अगेन क्वेश्चन नंबर 86. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. 4 मेन थियरीज दिए हैं. रेमंड विलियम्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, पियर्सी बोर्जुआ, ये राइटर्स के इन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं? हेजिमनी, कल्चरल कैपिटल, सब कल्चर, पॉपुलर कल्चर, उसको मैच करना है. सो अगेन, जिसने भी कल्चरल स्टडीज ढंग से पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर रिटन बाय विलियम फॉल्कनर? नाउ विलियम फॉल्कनर की जब हम बात करते हैं तो हम साउंड इन द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, एमिली, अ रोज फॉर एमिली, इनकी बात करते हैं. बट अगेन, since William Faulkner is a very, very important American writer, you have to also look at the major minor writers, minor works. So, जैसे कि Light in August and Absalom are the 2 works which are written by William Faulkner. Okay, A.K. Ramanujan पे question है. और A.K. Ramanujan, the famous Indian English poet, was also a photographer, translator, painter, classical singer, teacher at the University of Chicago. So see, writers की biographies पता होनी बहुत जरूरी है. हमारे पास में फर्डिनांड शेशोर एंड A.K. Ramanujan दोनों की biography से question इस बार आए हैं. Name the play during the performance of which the Globe Theatre was burned down in 1613. It was Henry the VIII. And then we have reading comprehension के 5 questions and passage reading comprehension में एक passage है उसके 5 questions, 5 or 3 questions, no 5 questions. Okay, so with that note, we have completed the entire analysis of UGC NET English Shift 1 paper. Since I am running out of breath after speaking so much for so long, I would want to end the lecture today. And I'll come again tomorrow and discuss Shift 2 ka entire question paper and analysis. Quick giveaway, some key takeaways from this entire long YouTube live is number 1, the paper wasn't hard. The paper was very very easy for those who knew the writers. So जो writers की list आपको अगर पता है ये writers मुझे पढ़ना है और इन writers में क्या क्या पढ़ना है, अगर आपको ये पता है, the paper was easy. There were 15 tricky questions, I admit, but वो हर साल होते हैं. उसकी वजह से मैं ये बोल दूं कि पेपर पूरा tricky था, ऐसा नहीं है. If 70% paper is something that any net aspirant can easily answer, जिन्होंने ढंग से preparation करी है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस, अगर उनमें से 50% भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, 20 थोड़े कैलकुलेटिव इंटेलिजेंट गेस वर्क वाले क्वेश्चंस हैं, आई वुड ऑलवेज से दैट द पेपर वाज इजी. एंड मैंने अभी आपको पूरा पेपर रिव्यू में ये चीज बताई है, एक एक चीज बताई है. और आई एम टेलिंग यू अगेन, जो भी लोग इस वेबिनार को एंड तक इस YouTube लाइव को देखेंगे, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू कि आप साथ में अपने लैपटॉप पे एक टैब खोल के रखिए जिसमें arpitakarwa.com का जो फुल कोर्स सिलेबस है वो डेली देखिए. कंट्रोल F करके उन राइटर्स को जो भी आपको अननोन लग रहे हैं उनको आप डालिए मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में, अलग अलग मॉड्यूल्स में, आप देखेंगे कि वो सारे राइटर्स कोर्स का पार्ट है एंड 2018 से है. एंड व्हाई दे आर अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स? बिकॉज उन्हीं राइटर्स से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं.
बिकॉज यू आर नॉट एक्सपोज टू दोज राइटर्स, आपने उन्हें ढंग से पढ़ा नहीं है, इसलिए हो सकता है आपको लगे कि पेपर बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस था। बट मुझे भी ऐसा लगा था पहली बार व्हेन आई वाज गिविंग द पेपर, प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर, जब मैंने पहली बार यूजीसी नेट का पास्ट ईयर पेपर निकाला था जिसमें इतने सारे इंडियन लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चंस थे जिन राइटर्स को मैं जानती नहीं थी, फर्डिनांड और विलियम रेमंड विलियम्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे भी लगा था कि यार ये तो बहुत आउट ऑफ द सिलेबस है, बट जब मैंने एक्चुअल में समझा कि सिलेबस क्या है, उन राइटर्स को पढ़ा, सो वही पेपर्स मुझे इजी लगने लग गए, राइट? सो पेपर इजी ही था, आई वुड नॉट से द पेपर वाज डिफिकल्ट। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, बट दैट इज फॉर एनी एग्जाम। आप इवन आप अपने यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम के लिए अगर जाएंगे एंड सिलेबस खत्म करके नहीं जाएंगे, पढ़ के नहीं जाएंगे अच्छे से, तो आपको वो क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट लगेंगे, बट उसका मतलब ये नहीं है पेपर डिफिकल्ट था। पेपर तब डिफिकल्ट होगा जब जो इंसान पढ़ के गए हैं या जिन टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनको भी पेपर डिफिकल्ट लगे। बट एज इन व्हेन आई टुक यू थ्रू द क्वेश्चन पेपर वेरी क्विकली, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप करे बिकॉज वो रिपीटेडली मुझे उनमें आपको सेम बातें बतानी थी। इसलिए आई जस्ट वांट यू टू note that please do your preparation accordingly. Major writers ka biography, minor works and major works ka in-depth study is very important. Secondly, माइनर वर्क्स को मत छोड़िए। जॉन लॉक, थॉमस कार्ले, ये राइटर्स लोगों को नहीं पता, इसलिए वो काफी इजी क्वेश्चंस गलत कर लेते हैं। सो हमें वो गलती नहीं करनी है, हमें माइनर वर्क्स भी पढ़ने हैं और माइनर राइटर्स भी पढ़ने हैं। Right. So with that note, I would like to take your leave. As I always say, that's it from my side for this lecture. I'll meet you very soon in the next YouTube live. Till the time we meet next, happy learning, keep loving literature, and stay tuned to arpitakarwa.com. Right. So with that note, I'm taking leave. आप सभी के लिए I'm going to come again tomorrow with the shift 2 का paper analysis, and I'm also going to keep the expected cutoff post available on YouTube community tab for any one of you who want to just have a look at it. Okay, so with that note, bye bye. Good night to all of you.